ট্রেডমিল টেস্ট, ঠিক আছে। তো সেখানে আমাদের কিছু প্যারামিটার্স নিতে হয়, ওকে। তো সেটারই মোটামুটি ইনিশিয়েশন এই টপিকটা দিয়ে। তো ফার্স্ট আমরা কি করব, রেস্টিং কন্ডিশনে পেশেন্ট বা একটা হেলদি ইন্ডিভিজুয়াল রেস্টিং কন্ডিশনে আছে, তখন তার আমি পালস আর বিপি মেজার করে নিলাম। এবার তার জন্য ইনিशियली যা যা प्रोसीड्योर করার দরকার, व्हाट एवर मैंने इनिशियली जो चीज़ें करना होता है, जैसे कि पेशेंट का कंसेंट लेना होता है, पेशेंट का राइट साइड में रहना पड़ता है, राइट, एंड हैंड सैनिटाइज करना पड़ता है अगर पेशेंट को टच कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो प्रिलिमिनरी चीज़ें और अपना इंट्रोडक्शन पेशेंट को देना होगा, फिर पेशेंट के साथ आप क्या एग्जामिनेशन कर रहे हो वो पेशेंट को एक्सप्लेन करना होगा। एवरीथिंग शुड बी इन लोकल लैंग्वेज, पेशेंट्स ओन लैंग्वेज। इफ द पेशेंट इज हिंदी स्पीकिंग यू शुड बी यूजिंग हिंदी, इफ द पेशेंट इज बेंगली स्पीकिंग यू शुड बी यूजिंग बेंगली, राइट। তাহলে আমি রেস্টিং পালস আর ব্লাড প্রেশারটা মেজার করে নেব। नाउ माय ऑब्जेक्टिव इज कि एक्सरसाइज के बाद पल्स एंड ब्लड प्रेशर में क्या क्या चेंजेस हो रहा है वो मुझे देखना है, ठीक है। आफ्टर एक्सरसाइज क्या चेंजेस हो रहा है, पल्स अगर बढ़ रहा है कम हो रहा है, और ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा है कम हो रहा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या चेंजेस हो रहा है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या चेंजेस हो रहा है, मीन प्रेशर में क्या चेंजेस हो रहा है, सब कुछ मुझे देखना है, ठीक है। तो पेशेंट को एक्सरसाइज कराना है, सब्जेक्ट को, नॉट पेशेंट। तो सब्जेक्ट को मुझे एक्सरसाइज कराना है। नाउ যেটা তোরা কেউ পড়ে আসিসনি, দ্য থিং উইচ ইউ হ্যাভ নট স্টাডিড ইজ দি গ্রেডস অফ एक्सरसाइज, ঠিক আছে। बिकॉज द रेस्पॉन्स इज डिफरेंट। আমি पेशेंट के यदि मतलब मैं अगर पेशेंट को या सब्जेक्ट को माइल्ड एक्सरसाइज कराता हूँ तो पल्स ब्लड प्रेशर का चेंजेस कुछ मिलता है, मॉडरेट एक्सरसाइज कराता हूँ तो पल्स ब्लड प्रेशर का चेंजेस कुछ और मिलता है, और अगर सीवियर एक्सरसाइज कराता हूँ तो कुछ और मिलता है, ठीक है। तो ये मुझे डिफरेंशिएट कराना है, और मिनिमम 4 मिनट्स पेशेंट को एक्सरसाइज कराना है अगर आप माइल्ड करा रहे हो, मॉडरेट करा रहे हो और सीवियर एक्सरसाइज करा रहे हो तो, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन जो क्वेश्चन आता है, तो क्या एक्सरसाइज कराए पेशेंट को, साइकिल चलाए या ट्रेडमिल कराए, कुछ भी करा सकते हैं, हाँ। लेकिन हाउ टू डिटरमाइन कि पेशेंट को से फॉर एग्जाम्पल मैं पेशेंट को स्पॉट जॉगिंग करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, स्पॉट जॉगिंग करो आप, ठीक है। तो ये किस में आएगा, माइल्ड एक्सरसाइज में आएगा कि मॉडरेट में आएगा कि सीवियर, आइसोटोनिक, ओके, दैट इज डिफरेंट। द क्वेश्चन इज डिफरेंट कि ये आइसोटोनिक एक्सरसाइज हो रहा है या फिर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हो रहा है, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। दैट इज डिफरेंट क्वेश्चन, बट माई ऑब्जेक्टिव इज पेशेंट को मुझे माइल्ड एक्सरसाइज करा के एक बार देखना है कि बीपी ब्लड प्रेशर का क्या पल्स रेट का क्या चेंजेस हो रहा है, एक बार मॉडरेट एक्सरसाइज 4 मिनट्स करा के उसके बाद देखना है, और सीवियर एक्सरसाइज करा के उसके बाद भी देखना है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन क्वेश्चन इज पेशेंट को क्या एक्सरसाइज कराए, और जो एक्सरसाइज कराए वो कितना इंटेंसिटी में कराए तो वो मॉडरेट हो जाएगा या फिर सीवियर हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे WHO का जो क्लासिफिकेशन है, एक्सरसाइज का जो क्लासिफिकेशन है, WHO का क्लासिफिकेशन, या फिर ACSM का जो क्लासिफिकेशन, ACSM इज अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, ठीक है। तो सेम क्लासिफिकेशन यूजुअली WHO में भी दिया गया है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। सो विच वन इज माइल्ड एक्सरसाइज, विच वन इज मॉडरेट एक्सरसाइज एंड विच वन इज सीवियर एक्सरसाइज, ये आपको पता करना है, ओके। तो उसके बाद ही हम लोग ये कर सकते हैं, राइट। मैं ये सेशन ज़्यादा नहीं लूँगा, अदरवाइज इट विल बी बोरिंग, ठीक है। मैक्सिमम 40 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 40 मिनट्स, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड, ओके। तो ये जो सेशन है इसके बाद आपको क्या क्या, यू विल बी एबल टू रिकॉर्ड पल्स एंड ब्लड प्रेशर आफ्टर चेंजेस इन पल्स एंड ब्लड प्रेशर चेंजेस इन एक्सरसाइज, मतलब इस सेशन के बाद आपको क्या क्या पता चलेगा, राइट। So learning objectives, know various grades and intensity of exercise, how to measure various grades and intensity of exercise. Then you will be able to explain the effects of different grades of exercise on pulse rate and blood pressure, and know the effects of different types of exercise on pulse and blood pressure. Okay, almost same, 3 and 4. Next slide. To record the effect of exercise on pulse rate and blood pressure. Next. तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, एक स्टेथोस्कोप चाहिए, वॉच चाहिए एंड एनालॉइड स्फिगोमैनोमीटर चाहिए। बहुत ही सिंपल इक्विपमेंट है, ठीक है, बहुत ही सिंपल इक्विपमेंट है। नेक्स्ट, ओके। प्रोसीड्योर तो मैं बाद में आता हूँ, ठीक है। प्रोसीड्योर उतना इंपॉर्टेंट मतलब अभी तो नहीं है, बिकॉज आप कॉम्पिटेंसी में ऑलरेडी पढ़ रहे हो क्या क्या प्रोसीड्योर है। नेक्स्ट, प्रीवियस स्लाइड, यस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, एंड दिस हैज बीन टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ
ACSM, that is American College of Sports Medicine. Okay, बाद में आप लोग sports medicine is a new, very new and upcoming post graduation in India, right? Previously, 5 to 10 years back, there was no MD sports medicine in India, right? So right now there is this new specialty called MD sports medicine, and MD sports medicine is there only in few medical college like AIMS New Delhi, Safdarjung Hospital New Delhi, right? And one medical college in there in Punjab, I forgot, right? So there are only 3 centers currently in India which offers MD in sports medicine after MBBS, right? So you will appear for NEET PG and there will be counseling, and nowadays MD sports medicine are getting easily booked by high ranked students, right? जो बच्चे अच्छे रैंक करते हैं वो स्पोर्ट्स मेडिसिन ले रहे हैं, because this is new upcoming subject or specialty, and also after passing students easily get a very good job and international touring and everything, for football match or for cricket match, so they are hired. Okay, also in government job like Sports Authority of India. Okay, so this is upcoming and very good, and we don't know the future, but right now it is having a bright career, right? Okay, anyway, so that is different. So you need to remember a little bit of this, not everything. This is a data. Okay, our brain is not a computer. This is not a storage. So I will tell you which part you need to remember from this slide. Okay, but this slide is important. You can take a snap or you can write it down. Okay. So actually, we can determine whether I am exercising in mild grade or moderate grade or very severe grade. Okay, we can determine it by using our HR max, okay, by our heart rate reserve, or by VO2 max, and by MET. MET is metabolic equivalent of task. Okay, I'll define everything, but for your level, everything is not required for your level. But what you need to remember is the HR max. Okay, please give the next slide. Okay, so HR max is your maximum heart rate. HR max is your maximum heart rate. Say if I'm exercising, say for example, simply spot jogging, right? Simply spot jogging, my heart rate will rise. Everybody agree, my heart rate will rise, right? My heart rate will rise. मेरा heart rate बढ़ेगा. मैं अगर एक जगह खड़ा होकर मतलब jogging कर रहा हूँ तो मेरा heart rate बढ़ेगा, right? But how much? Okay, 100, 200, 300, 400, 1000 possible? No, there is a limit, right? There is a limit for my heart rate, and that limit is called HR max, and the formula is 220 minus age, right? So if I am 36 years old, so my maximum heart rate will be 220 minus 36, that is 184. से नहीं बढ़ेगा. This is my maximum heart rate. If your heart rate is 20, if your age is 20, right? If your age is 20, your maximum heart rate will be 200. That is simple formula, 220 minus age. Okay, and that is the most conventional formula we remember in sports medicine, right? So 220 minus age is your maximum heart rate, correct? So your maximum heart rate is, I suppose all of you are around 20 plus minus 1 or 2, right? So your heart rate, maximum heart rate will be 220 minus 20, that is 200. So आप कितना भी मेहनत कर लो, आप आपका heart rate 200 से ऊपर नहीं लेके जा पाओगे, correct? Your maximum heart rate is 200. So this is your HR max, and everybody has got his or her own HR max, and that depends on age. Okay. So with the increasing age, you gradually decline your HR max. Okay. जितना एज बढ़ेगा उतना HR max आपका कम होते जाएगा, right? And if your heart rate is more than your HR max, so this is not normal. This is not normal. There is something abnormality. So some arrhythmia is happening inside your heart, right? Some supraventricular tachycardia or some abnormal rhythm. There is some rhythm disturbance. This is not normal. Okay.
So if say for example I'm 36 years old and my maximum heart rate is 184, that is 220 minus my age 36, so it comes to 184. And say for example my heart rate is 250, so that is more than my HR max. So it is definitely abnormal. Some arrhythmic event is happening inside my heart. Arrhythmia coming from my atria or ventricle, right? But we are talking about normal healthy individual, a sports person, okay, a sports person, right? Okay, so heart rate max, HR max is 220 minus age. This is the commonest formula which we use, but another formula is there. HR max is equal to 208 minus 0.7 into age. But more or less these are same. Okay, more or less these are same value will be coming out, right? But for your level, you remember the formula HR max is equal to 220 minus age. Okay. So say for example you are 20 years old, your HR max is 200. Okay. But now HR max is your maximum heart rate, right? But now your heart rate is 72. You are starting exercising, you are cycling, okay? You are cycling. Gradually your heart rate is increasing, okay? From 72, it is now 80, 90. So you are cycling means this, two things that are determining. One is the resistance of the cycle chain, right? And another is revolution per minute. I can increase the resistance as well as I can increase the revolution per minute, right? Rotation per minute, right? So say for example, I am increasing RPM. So initially you are cycling at 40 cycle per minute, okay? And your heart rate is 100. 40 cycles per minute, 40 times you are rotating per minute and keeping the resistance same, right? So 40 cycles per minute, that means your heart rate is 100. So it is how much percent of HR max? 50% of HR max, okay? So 50% of HR max. So you are at 50% of HR max. Next slide. No. Previous. ওই গ্রাফটা যেটা ছকটা, হ্যাঁ, okay. So you are at 50% of HR max. Then what is your level of exercise? See this, light or very light or moderate or vigorous or near maximal? Very light. So you are doing very light exercise. If your HR max is 200 and you are exercising at a pace where your heart rate is 100 per minute, that means 50% of HR max, okay? So 50% of HR max means you are doing very light exercise, okay? Now you are further increasing the speed of your exercise or rotation per minute, right? And now your heart rate is say for example 150 per minute. 150 per minute. So how much percentage of HR max is it? 75%, right? 150 by 200 into 100, it comes to 75%. Okay. So what is the grade of your exercise? Moderate. You are doing moderate exercise. Okay. Okay. So this classification will be a little bit difficult for you. You remember there are three. You can remember the ACSM criteria. This is ACSM criteria, American College of Sports Medicine, right? Okay. But for international standard, we also remember the WHO classification. So WHO classification is nothing but the same. Very light and light combined is called mild exercise. Very light and light combined. So up to 64%, right? Up to 64%, you are doing mild exercise. Okay. Up to 64% of HR max, you are doing mild exercise. From 64% to 76%, this is moderate exercise. And over 76%, that is vigorous and near maximal, over 76%, it is severe exercise. So you just remember three grade of exercise: mild, moderate, severe. Mild, moderate, severe. And you need to remember only two values. One is 64 and another is 76. Okay. Just दो नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, एक 64 another is 76. Below 64 से नीचे अगर आपका percentage of HR max है, so you are doing mild exercise. Okay. 64 to 76% इसमें अगर आप exercise कर रहे हो तो आपका exercise है moderate exercise, right? And if you are doing exercise which is taking your heart rate to
more than 76% of your HR max, you are doing vigorous exercise or severe exercise. So mild, moderate, severe. Just remember two values, 64 and 76. Okay. Okay. Now your classification is clear. Classification of exercise very clear. Okay. Now I can ask the patient to do exercise with a heart rate monitor. Okay. Patient का heart rate monitor लगा हुआ है या फिर स्मार्ट वॉच लगा हुआ है, जो भी आजकल तो ये सब एनाड्रॉइड मैनोमीटर या फिर मैनुअल चेकिंग ये सब यूज नहीं होता है. जस्ट वेयर ए स्मार्ट वॉच विच इज a very good quality smartwatch, medically approved, right? Medical grade smartwatch you can use and check the heart rate. Okay. So it will tell the patient's heart rate and patient will be exercising, right? You check the heart rate and calculate the HR max. Okay. The percentage of HR max, and you can determine whether the patient is doing mild exercise or moderate exercise or severe exercise. Okay. So that is one criteria we can use to classify mild, moderate and severe exercise. There are other criteria as well. That is HRR. HRR is heart rate reserve. Heart rate reserve. Okay. So what is heart rate reserve? Again, it is very simple. Heart rate reserve is, say for example, your heart rate अभी आप बैठे हो, ठीक है, एकदम resting condition में हो, just paying attention to my class, right? So say for example, your baseline heart rate is 70 beats per minute, right? And 70 beats per minute is your baseline heart rate, resting heart rate, okay? And your heart rate HR max is 200. We have already calculated. You are 20 years old, so your HR max is 200. So how much your heart rate reserve? Heart rate reserve is maximum heart rate minus baseline heart rate. This is your heart rate reserve. What a reserve আছে দরকার পড়লে কাজে লাগাবো, right? Okay. So ये 200 minus 70. So 130 is your heart rate reserve. Okay. So according to heart rate reserve also, we can calculate the intensity of exercise. ঠিক আছে, এটা মনে রাখার দরকার নেই, ঠিক আছে, at least not at your level. Okay, at your level only remember the percentage of HR max. Okay, below 64% mild exercise, 64 থেকে 76 moderate exercise, and over 76% severe exercise. Okay, that's it. Okay, now VO2 max. Okay, VO2 max is a very important term, and VO2 max is it's like a golden term in sports medicine. VO2 max. What is VO2 max? Per minute. Okay. Volume of oxygen consumption per minute, which is maximum. Just like when you are exercising, you have got a heart rate reserve, and beyond which you cannot raise your heart rate. Okay, your heart rate reserve is 200. आप जितना भी मेहनत कर लो, 200 से ऊपर आपका heart rate लेके नहीं जा सकते, right? But VO2 max is such a parameter, such a good parameter, which is indicative of your athletic performance. Okay, VO2 max, मैं एक example देता हूँ. Say for example, it depends on body weight, it depends on your training, right? It depends on your training, athletic training, right? And it also depends on racial factors. Okay, it also depends on racial factors and also depends on gender. Male, female vary करता है, ठीक है? And VO2 max is your performance indicator, right? I cannot compare my VO2 max with the VO2 max of Usain Bolt, right? So VO2 max is a parameter which you can develop, जिसको आप improve कर सकते हो, ठीक है? जिसको आप improve कर सकते हो. So what happens? Say for example, I am lying down peacefully, एकदम peacefully I am lying down, absolutely doing nothing. Okay, absolutely doing nothing. How much oxygen I am consuming? 250 ml per minute. It is my baseline or resting oxygen consumption. Okay, 250 ml per minute. मैं कितना ऑक्सीजन पी रहा हूँ every minute? 250 ml ऑक्सीजन मैं every minute पी रहा हूँ, ठीक है? I am taking 250 ml of oxygen every minute. So this is my baseline oxygen consumption. If I start exercising, it will increase. Okay, from 250 ml per minute to 500 ml per minute to 1 liter per minute to 1.5 liter per minute
2 liters per minute, 2.5 liter per minute, 3 liter per minute, 3.5 liter per minute. अब इसके बाद मैं जितना भी मेहनत कर लूँ उससे ज़्यादा ऑक्सीजन मैं नहीं पी सकता, because the capacity of my lung is limited, right? The capacity of my oxygen delivery to the tissues is limited. My blood flow is limited. My heart rate is limited, right? So इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं इतना ही ऑक्सीजन यूज़ कर सकता हूँ पर मिनट. Okay, but the thing is, how does it differ from HR max? HR max को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, जितना भी आप एक्सरसाइज कर लो, जितना भी ट्रेनिंग कर लो, ठीक है, जितना भी स्टेरॉइड लगा लो, जो भी मतलब जो भी है, ठीक है, तो आप HR max को उससे ज़्यादा नहीं लेके जा सकते. इट डिपेंड्स ऑन योर एज. ओनली वन फंक्शन, HR max इज द फंक्शन ऑफ योर एज, राइट? दैट इज 200, 220 माइनस एज. बट VO2 max को आप इम्प्रूव कर सकते हो, एंड दैट इज द परफॉर्मेंस इंडिकेटर. जो एथलीट लोग जो मेहनत करते, डेली मेहनत करते, दे आर इम्प्रूविंग देयर HR max. ओके, मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करता या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड करता हूँ, ठीक है, तो मेरा HR max मैक्सिमम कितना तक जाएगा? 3.5 to 4 लीटर पर मिनट जाएगा. बट जो ट्रेंड एथलेट्स होते हैं, ठीक है, जो स्प्रिंट रनर होते हैं या फिर मैराथन रनर होते हैं, उनका VO2 max बहुत ज़्यादा होता है. से फॉर एग्जाम्पल 10 to 11 liters per minute. Okay, how do they develop that? Okay, so during exercise, during severe exercise or during high intensity training, what happens? आपका लंग्स में जो कुछ लंग्स में क्या होता है, जो बेसिक यूनिट जिसमें डिफ्यूजन होता है, क्या है वो? एल्वियोली है. आपको पता है हमारे लंग्स में कुछ एल्वियोली है जो कोलैप्स रहता है, जो बैलून्स ओपन ही नहीं है, ठीक है, बैलून्स है लेकिन वो ओपन ही नहीं है. अगर ओपन नहीं है तो उसमें एयर नहीं जा रहा है, उसमें एयर नहीं जा रहा है तो डिफ्यूजन नहीं बन रहा है, ठीक है, डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, करेक्ट? তাই আজকে আমাদের রাজপথে নামতে হয়েছে. আমরা যেসব অধ্যাপক অধ্যাপিকা তাদেরকে অর্থের অভাবে স্কুলে পর্যন্ত বেতনটুকু তারা দিতে পারবে না, প্রতিবাদ সভায় আমরা সমবেত হয়েছি. এই প্রতিবাদ ভিসি ম্যামের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, চেয়ারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়. আমি যেটুকু জানি যে ম্যাডামকে बारे बारे बोला हो, धीरे धीरे वो जो कोलैप्स्ड एल्वियोली है आपका ओपन हो रहा है, ठीक है, बिकॉज आपका एयर हंगर हो रहा है और उसमें जो एयर जा रहा है वो आपका एक्स्ट्रा एल्वियोली को ओपन कर रहा है, और वो एक्स्ट्रा एल्वियोली ओपन होने के साथ साथ देयर इज नियोवास्कुलराइजेशन. दीज आर द चेंजेस व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट गोइंग इनटू द जिम, यू फर्स्ट स्टार्ट हिटिंग द जिम, राइट? यू आर स्टार्टिंग हिटिंग द जिम. तो फर्स्ट दो चेंजेस जो आपका एल्वियोली में हो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो जो फास्ट चेंजेस आपका लंग्स में होता है, दैट इज ओपनिंग ऑफ नॉन रिक्रूटेड. ओके, ये फर्स्ट चेंज. एंड सेकेंड चेंज इज नियोवास्कुलराइजेशन अराउंड दोज न्यूली रिक्रूटेड एल्वियोली. नियोवास्कुलराइजेशन मीन्स न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन, ठीक है. तो पहले जो नॉन रिक्रूटेड कोलैप्स्ड एल्वियोली था वो ओपन हो गया, उसके बाद उसके चारों तरफ न्यू ब्लड वेसल भी फॉर्म हो गया. नाउ दिस एल्वियोली विल टेक पार्ट इन द डिफ्यूजन, right? And you are capable of taking extra oxygen from air, so you are improving your VO2 max. Okay, so आप जितना भी मेहनत कर रहे हो, डेली आप जिम जा रहे हो या फिर रनिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आपका न्यू एल्वियोली रिक्रूट हो रहा है, न्यू वास्कुलराइजेशन फॉर्म हो रहा है, एंड यू आर इंप्रूविंग योर वन पैरामीटर दैट इज VO2 max, ठीक है. ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल फुटबॉल एकेडमी में आप एक स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट हो, ठीक है. हाउ टू चेक which फुटबॉलर हैज द हाईएस्ट एथलेटिक परफॉर्मेंस? जस्ट सिंपली चेक द VO2 max. Okay, simply check the VO2 max. Okay, Cristiano Ronaldo, they are having very high. Messi, they are having very high VO2 max, right? So they have developed that very high VO2 max. Okay, so we can calculate level of exercise with the help of VO2 max as well. Okay, 37%, 37 to 45%, 46 to no need to remember. Okay, no need to remember for you. Okay, then also with the MET or metabolic equivalent of task. Next slide. Okay, heart rate reserve I have already told that HR max minus resting heart rate. It is heart rate is next slide. Okay, VO2 max is the maximum oxygen consumption I have already told.
Next is MET or metabolic equivalent of task. What is MET or metabolic equivalent of task? This is defined as the energy cost of sitting quietly. आप simply बैठे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, okay, sitting quietly, and is equivalent to calorie consumption of 1 kilocalorie per kg per hour, and 1 MET is equal to 3.5 ml of oxygen per kilogram per minute. Okay, 1 MET is equal to 3.5 ml of oxygen per kilogram per minute. This is metabolic equivalent of task. Okay, this is simply an example. Okay, consider a 20-year-old subject with resting heart rate of 80 per minute. Then HR max is equal to वो पहले सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाया है इसमें, ठीक है. तो HR max is equal to 194 and heart rate reserve is 194 minus 80, that is 114. And for moderate exercise, target heart rate should be 64 to 74% of HR max. So heart rate during exercise should be 124 to 147. Just simply an example. Okay. मैंने ऑलरेडी जो बोल दिया आपको, बता दिया आपको, उसका सिंपली एक एग्जाम्पल. ओके ओके, नाउ देयर आर few things. Now the slides are not required. Now the few things like what will be the changes in pulse and blood pressure in mild, moderate and severe exercise. So for your level, you need to remember HR max is equal to 220 minus age, and if it is less than 64% of HR max, it is mild exercise. 64 to 76% is moderate exercise, and more than 76% is severe exercise, right? Okay. Now the calculation is simple. Only one question will be asked to you. Okay. So whether it is mild exercise or moderate exercise, your heart rate is going to increase and your blood pressure, both systolic and diastolic, is going to increase. In some cases, diastolic blood pressure may remain normal, but more or less, systolic blood pressure is definitely increasing and your heart rate is definitely increasing when you are exercising at mild or moderate degree. Okay. Why? Why? I told you in today's class, sympathetic stimulation. Okay, this is because of sympathetic stimulation, and this sympathetic stimulation, you know, a little bit psychogenic, right? So say for example, मेरे सामने एक बहुत बड़ा weight रखा है, 50 kg, 50 किलो या 60 किलो, जो भी है weight रखा है, and I am going to lift it. I am doing deadlift. Okay, so मुझे ये उठाना है. अब I am thinking कि मुझे ये weight उठाना है, right? So with that thinking, my sympathetic stimulation is up, right? So even before lifting the weight, my heart rate is increasing. Even before lifting the weight, my heart rate is lifting. If I say, for example, I have to run a 400-meter sprint, okay? So it has not started yet. अभी sprint शुरू नहीं हुआ, उससे पहले ही मेरा heart rate बढ़ गया, ठीक है? So this is because of sympathetic stimulation. So for mild exercise, moderate exercise, there will be sympathetic stimulation, and also for severe exercise, there will be sympathetic stimulation. And this sympathetic stimulation क्या करता है? Norepinephrine secrete करता है, and norepinephrine will increase your heart rate. Norepinephrine will increase the contractility of heart. Okay, norepinephrine आपका heart rate बढ़ाएगा, norepinephrine cardiac muscle का contractility बढ़ाएगा. So heart rate बढ़ेगा, and contractility बढ़ने से stroke volume बढ़ेगा. Stroke volume बढ़ेगा तो systolic blood pressure बढ़ेगा. ठीक है? So at the level of mild and moderate exercise, your heart rate is increasing, your systolic blood pressure is increasing. Diastolic blood pressure either remains normal or slightly increased, right? In mild to moderate exercise. But what happens in severe exercise? Okay, and this is the question your examiner will ask you. In case of severe exercise, your diastolic blood pressure falls to a significant degree. Okay, आपका diastolic blood pressure fall कर जाता है to a severe degree, right? बहुत ज़्यादा fall होता है diastolic blood pressure. Now the question is why? This is the only question you will face and you need to explain. Okay. Yes. So I told in today's class, those who have attended today's competency exam. So the answer is local effect. So in my case, I was exercising with a cycle, right? So I was cycling. So which muscles were working?
the quadriceps, the glutes, the hamstrings, these are the muscles, the lower body muscles which were working during cycle. Is my biceps working during cycling? No. My triceps working during cycling? No. My neck muscles, trapezius working during cycle? No. Right. So you divide your musculature into exercising muscle and non-exercising muscle. So biceps is your non-exercising muscle, and the glutes, the hamstring, the quadriceps, the soleus, these are your exercising muscles, right? Gastrocnemius, these are your exercising muscle. Okay. Now what happens in the exercising muscle, if you are doing a very severe degree exercise, matlab you are just crossing 76% of your HR max. Okay, when you are crossing 76% of your HR max, you are consuming more ATPs, right? You are consuming more ATPs. बहुत ATP खा रहे हो आप, बहुत oxygen पी रहे हो, right? Okay. So with this, you are getting accumulation of some local metabolites into your exercising muscle. Okay. Like ATP is consumed. हाँ, so ATP break करके क्या आएगा? Adenosine आएगा, right? Lactic acid होगा muscles में, potassium होगा, H plus ion होगा. All these are vasodilator. They will dilate blood vessels. Where? सब जगह dilate नहीं होगा, सिर्फ exercising muscle में, only in exercising muscle. In my case, I was cycling, so there will be vasodilation in gluteus muscle, vasodilation in quadriceps, in hamstring, in gastrocnemius. So all the lower body musculature, there will be vasodilation. Okay, and this vasodilation will try to reduce blood pressure, right? Vasodilation होगा तो blood pressure fall करेगा, right? But at the same time, one thing is happening, that is sympathetic stimulation. It is happening throughout. Whether it is mild exercise or moderate exercise or severe exercise, vasodilation is occurring throughout the period, right? So when you are crossing the 76% limit, when you are crossing the 76% limit of 76% limit of your maximum capability, that is HR max, आप आपका HR max का 76% क्रॉस कर रहे हो, तो क्या होता है? आपका जो local vasodilation effect है, that overcomes this sympathetic stimulation effect. ओके, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आपका ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है एंड लोकल वेसोडाइलेशन इफेक्ट, लोकल इफेक्ट आपका ब्लड वेसल को डायलेट कर रहा है, ठीक है? सो लोकल इफेक्ट वाज स्टिल देयर इन मॉडरेट एक्सरसाइज. आप जब मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहे थे तब भी आपका लोकल इफेक्ट हो रहा था, बट द थिंग इज सिंपैथेटिक सिस्टम वाज विनिंग. ओके, सिंपैथेटिक सिस्टम वाज विनिंग, वाज इन अपर हैंड. सो दैट इज व्हाई देयर वाज vasoconstriction as a whole, right? But when you are crossing 76% limit and you are moving from mild to severe degree exercise, your sympathetic system is not winning. The winning part is local effect, local vasodilation effect, right? And this vasodilation is so severe that it overcomes the vasoconstriction effect of sympathetic system, and ultimately there is vasodilation and fall in diastolic blood pressure, right? Clear? That's it.